The Saraswati Vandana is performed by the students of the Faculty of Music and Fine Arts, University of Delhi. देश में पहले एक क्रांति हुई थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद क्रांति हो रही है इंडिया के डिजिटाइजेशन के लिए। University of Delhi, as part of its year-long centenary celebrations, is proud to welcome you all to the International Conference on Infrastructure, Information and Innovation for Building New Bharat. I now request Professor K.P. Singh Ji, Director, Gandhi Bhavan and Organizing Secretary of the conference, to kindly introduce the conference. Good afternoon. नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि महामहिम भारत गणराज्य के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंचुरी सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। वाइस चेयरमैन गांधी समिति गांधी दर्शन श्री विजय गोयल जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर श्री प्रकाश जी, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी, DU सेंचुरी सेलिब्रेशन कमेटी की कन्वीनर प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा जी, distinguished teachers of this prestigious university, deans, heads, principals of different colleges, directors of different institutes and centers, ACEC members, and dear students, आप सभी का इस एकेडमिक महाकुंभ में अभिनंदन और वंदन और स्वागत है। His Excellency, it is indeed a great pleasure and subject matter and happiness that Delhi University, which came into existence 1st May 1922, has completed 100 years glorious of academic excellence. The university was started having 3 colleges, St. Stephen Hindu and Ramjas, 2 faculties, arts and science, having only 540 students, without campus and without leader and professors. During the 100 years, this university, the great Vice Chancellors, Hari Singh Gaur, Motilal, V.K.R.V. Rao, great legend Maurice Guire, has built this university, and now this is university, one of the prestigious university, not in India, but the Asian countries. And now this university has the 90 colleges, 86 departments, 16 faculty, 20 academic research centers, enrolling almost approximately 2 lakh students in regular mode and 3 lakh students in distance mode. So entire fraternity, His Excellency, welcome you on this very special occasion. This is our proud privilege, and I really feel honored that when the country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया है, नीति है, राजनीति है, और आज हमारा देश, जिन्होंने 200 साल तक कभी राज किया था, उसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी देश की बन गई है, और भारत का भारत वंशी भी वहां पर राज कर रहा है। ये हमारे देश की ताकत है, नरेंद्र मोदी जी का जो एक सशक्त हमारे पास निर्णायक है। हम खुशनसीब हैं कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल मना रहा है, हिज एक्सीलेंसी हमारे चांसलर महोदय, भूतपूर्व वेस्ट बंगाल के गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे बीच में हैं, और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर
हम फॉर्चुनेट हैं कि शताब्दी समारोह दिल्ली विश्वविद्यालय मना रहा है कि वो हमारे कुलपति हैं कि जो हमेशा प्रोत्साहित ही नहीं करते बल्कि कार्य को मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरा भरपूर सहयोग भी देते हैं। और आज जो महाकुंभ है उन्हीं के मार्गदर्शन का नतीजा है। थैंक यू ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब। जो ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इनोवेशन बिल्डिंग न्यू भारत, क्योंकि ये जो 3 कॉन्सेप्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। मैं समझता हूं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश यूनिवर्स का सृजन करते हैं, उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और इनोवेशन किसी भी राष्ट्र का सृजन करते हैं। जिस राष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और इनोवेशन सशक्त है, मजबूत है, वो राष्ट्र विकसित हैं। और आज हम इस तरफ अग्रसर हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये 3 दिवस का हमने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें करीब 500 डेलीगेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से इसमें भाग ले रहे हैं और करीब 150 रिसर्च पेपर्स हमें रिसीव हुए। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, आजादी का अमृत महोत्सव, एक विधान एक संविधान, आईसीटी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, और वो सभी क्वालिटी कंट्रोल के अडॉप्ट करते हुए उसको एक खूबसूरत प्रोसीडिंग्स में हमने छापा है, जो आज हमारे हिज एक्सीलेंसी के हाथों से उसका इनॉग्रेशन होगा। कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं संक्षिप्त 1 मिनट में, क्योंकि ये आज इनॉग्रल यहाँ है, 11 और 12 को कॉन्फ्रेंस सेंटर जो दिल्ली विश्वविद्यालय की विसिनिटी में है, वहाँ पे हमारे प्लेनरी सेशंस, टेक्निकल सेशन होंगे। एंड वी हैड ए वेरी ब्यूटीफुल 4 प्लेनरी सेशंस, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, एंड 2 very specific plenary sessions by the academic administrations, one by the Vice Chancellor Conclave, National Education Policy 2020, Building New Bharat, and a principal talks, Libraries and Labs, a temple of learning and experiment. All has been included in this conference. I will not take much time. बस मैं His Excellency के संबंध में यही कहूँगा कि आज हम बहुत ही गौरवान्वित हैं और हम आभार करते हैं और आपके लिए कोटि कोटि नमन कि आज इस प्रोग्राम में आप आए। आपका सानिध्य, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. I now request Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, Professor Yogesh Singh Ji, to kindly deliver the welcome address. Sir. Good afternoon, Namaste. Honorable Shri Jagdeep Dhankhar Ji, Vice President of India and Honorable Chancellor of University of Delhi. Shri Vijay Goyal Ji, Vice Chairman, Gandhi Smriti and Darshan Samiti, Government of India. Professor Balram Pani, Dean of Colleges, Professor Shri Prakash, Director, South Campus, Dr. Vikas Gupta, Registrar of the University, Professor Neera Agnimitra, Convener, Centenary Celebration Committee, Professor K.P. Singh, Director, Gandhi Bhavan, and Secretary of the Organizing Committee of this conference, members of University Court, Executive Council, Academic Council, Finance Committee, Building Committee, other statutory committees of the university, respected deans, directors, and principals of various institutions of University of Delhi, head of the departments, outstanding faculty members, accomplished speakers,
invited guests, esteemed delegates of the conference, members of various organizing committees, my dear media friends, officers, officials of University of Delhi, my dear talented and gifted students, good afternoon again to all of you. As 23rd Vice Chancellor of this great institution, I welcome you all in the inaugural ceremony of International Conference on Infrastructure, Information and Innovation for Building New Bharat. University of Delhi, as Professor K.P. Singh has just said, University of Delhi has completed 100 years. 100 years of successful and accomplished journey. I would like to congratulate all of you for the same. India has also completed 75 years of its independence. Congratulations again. Today, we are very lucky to have Honorable Chancellor of University of Delhi and Honorable Vice President of India as chief guest of this function. He is the source of inspiration. He is the source of inspiration, influence and motivation to young and bright minds of India. He is an outstanding lawyer. And very impactful leader. He has been the governor of West Bengal and also served as Union Minister for Parliamentary Affairs. Besides such accomplishments, he is a very good human being and very understanding person. मिलकर फिर मिलने का मन करे, ऐसे हैं भारत के उपराष्ट्रपति। राहत इंदौरी साहब का जो शेर है वो इन पे भी बहुत अच्छा लगता, सही लगता है कि किसी को न हो सका उसके कद का अंदाजा, किसी को न हो सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सिर झुका के चलता था। आपका स्वागत है। आप पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। I would like to welcome Shri Vijay Goyal, Vice Chairman, Gandhi Smriti and Darshan Smriti, Ministry of Culture, Government of India. He was former President of Delhi University Students Union in 1977. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अच्छी बुरी स्टूडेंट्स ने जैसी बनी उसमें इनका बड़ा योगदान है। He was student leader in 1977. He did his MCom and LLB from University of Delhi. He elected to 11th Lok Sabha from Sadar constituency and 12th and 13th Lok Sabha from Chandni Chowk constituency. Served as Minister of State for Labour, Parliamentary Affairs, Youth Affairs and Sports. Also member of Rajya Sabha from Rajasthan in 2014. He is a very soft-spoken, affectionate person. तो इनके लिए मैं कहता हूं कि सलीकों से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, सलीकों से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। Honorable Chancellor Sir, Delhi University has completed 100 years. Professor K.P. Singh has rightly said we started with 3 colleges which were in existence prior to establishment of University of Delhi. But now we have 90 colleges, 16, we started with 2 faculties, now 16 faculties, departments also 8 teaching to 86. And when this university was started, 40,000 rupees were given to the university. And now our annual budget is more than 1,000 crore. Delhi University produced first PhD in 1948. And in 1958, after 10 years, 28 PhDs. And on the last convocation, university produced 802 PhDs, highest in the university. We are running 540 programs, different programs in the university. When it comes to women presence, on May 1st also I shared this. Like in 1931, there were only 82 girls in the university. In 1941, 340. 1951, 1,737. 2021, 3,24,067. More than 50% are girl students in University of Delhi. It's a matter of pride to all of us. Congratulations to all of you.
What a superb, what a superb, what a superb, magnificent and spectacular performance. And you know, this time we have admitted students through common university entrance test. Up to last year, we were admitting students through +2 marks. Many people were skeptical about that number of girls may be reduced because if they are coming from entrance test, their number can be reduced. They may not be that analytical. But this also, Delhi University aspirants and students have proved totally wrong. This time also, total students admitted in the university, the number of girls is more than 50% in the admissions also. And through CUT, we could also minimize the disparity amongst boards, and we could provide equal opportunity for all the students. Now, this conference is Infrastructure, Information, and Innovation for building new India, new Bharat, and PM has rightly said, now we have 25 years. We want to make India as a developed nation, prosperous nation, and powerful nation. Our size of economy is $3 trillion. We want to go to 5 trillion, 10 trillion, and $20 trillion. It means what? We need 10% growth rate for next 25 years. And instruments are what? Instruments are infrastructure, information, and innovation. All these three are also instruments for the same. That's why if we organize such conferences in the universities, we may be able to suggest something very significant and important to the government. And when I say 10% growth rate, this is important, but not easy to achieve. That's why university should play a very important and significant role here. Presently, our average is 5.81% from 1951 to 2020-22. So, always remember, my dear students, those who are here, when we import something, we not only pay for our ignorance, but also pay for our incompetence. That's why a country of 131 crore people cannot rely only on imported technology. Imported technology is fine, but we have to create own technology. That's why, and we have to create value in the chain. So every policy, every proposal should be scrutinized on the filter of growth rate. If it accelerates growth rate, yes. If it decelerates growth rate, we should say no to that proposal for next 25 years, and we have to work on such ideas. Then we will be able to achieve the target which Prime Minister has given to all of us. And lastly, whenever I see so many students, I always take a promise that, my dear students, we will not do anything in our lifetime which is against the interest of our country. How many of you give me this promise? Please raise your hand. We will not do anything in our lifetime which is not in the interest of our country. जिनके रह गए हाथ वो भी उठा लो, अच्छा ही लगता है. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much, sir. पहले ज़माने में मेरिट, कारनामे कुछ इस तरह से बयां करते थे. When asked, क्या बताएं यार, क्या कारनामे नुमाया कर गए. पैदा हुए, बीए बने, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए. That was then. Now, with the new education policy, which is renamed as the National Education Policy, there's a complete transformation in our thinking. Instead of becoming a job seeker, we are now becoming job givers. I now request Honorable Vice Chancellor Professor Yogesh Singh Ji to felicitate our Chief Guest, Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar Ji.
Sir, I once again request you to felicitate Shri Vijay Goyal ji, Vice Chairman, Gandhi Smriti and Darshan Samiti. थैंक यू सर। अब मैं निवेदन करूंगी श्री विजय गोयल जी से, जो गांधी स्मृति और दर्शन समिति के वाइस चेयरमैन हैं, कि वो हमसे अपने विचार साझा करें। विजय गोयल जी। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब एक दिल्ली विश्वविद्यालय का पुराना छात्र 50 साल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के इतने बड़े प्रोग्राम में आए तो उसको कितनी खुशी होती है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। शताब्दी वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय के आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारत के उपराष्ट्रपति, जो न केवल एक भारतीय राजनेता अच्छे हैं, एक सीनियर एडवोकेट हैं, सांसद रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, उससे भी ज्यादा है कि मैंने इनसे ज्यादा शालीन, नम्र, व्यवहारिक और अच्छा व्यक्ति देखा नहीं है जी। ऐसे धनखड़ जी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे गर्व है दिल्ली विश्वविद्यालय के नए युवा कर्मठ उपकुलपति के ऊपर, जिनके आने के बाद मैंने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा प्रोसीजर ही बदल गया एडमिशन का। अब एडमिशन पूरे भारत में जो विद्यार्थी हैं उनमें मेरिट के ऊपर हो रहे हैं, और जिस कुशलता से सारे दाखिलों को उन्होंने संभाला है और जिस कुशलता से वो लगातार प्राध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं, मैं समझता हूं इतना अच्छा उपकुलपति हमें मिल नहीं सकता है। जाकर मंच पर बैठे हुए डायरेक्टर साउथ कैंपस, डीन ऑफ कॉलेजेस, नीरा अग्निमित्रा जी, बलराम पाणी जी, प्रकाश सिंह जी, हमारे रजिस्ट्रार विकास गुप्ता जी और गांधी भवन के श्री केपी सिंह जी। मुझे मालूम नहीं इनमें से कितने लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, पर आप सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी को विजय गोयल ने भोगा है जी। आप देखिए, हमने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की, हमने एमकॉम की, हमने लॉ फैकल्टी से लॉ की, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, हम यूनिवर्सिटी कोर्ट में रहे, हम यूनिवर्सिटी फाइनेंस कमेटी रहे, हम यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहे, हम सत्यवती कॉलेज के चेयरमैन रहे, हम श्री राम कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में रहे, हम लक्ष्मीबाई कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में रहे। तो आप बताइए, आप में से इससे ज्यादा किसी ने विश्वविद्यालय में समय गुजारा हो तो जी? हम दिल्ली विश्वविद्यालय के नेशनल प्लेयर रहे, खो खो और बास्केटबॉल के अंदर भी। और सबसे बड़ी बात, हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने रस्टिकेट कर दिया और बाद में हम उसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने जाके। तो मेरी यादें तो बहुत ताजा हैं जाके। और अभी वाइस चांसलर साहब ने मेरे लिए एक शेर बोला था कि कुछ भी बोल देते हैं जी। तो मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक नेताजी थे, आप जानते हैं जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। एक नेताजी थे, वो अपने पुराने कॉलेज में गए, उन्होंने गेट देखा और गेट के पास आए तो बोले, अरे वाह, वही पुराना गेट। फिर अंदर चले गए, अंदर जाके वो लाइब्रेरी में गए, अरे वाह, वही पुरानी लाइब्रेरी। फिर उसके बाद वो क्लासरूम में गए, उसको देखकर उन्होंने कहा, अरे वाह, वही क्लासरूम।
फिर सीढ़ियां चढ़ के कैंटीन में चले गए, अरे वाह वही पुरानी कैंटीन। फिर उसके बाद हॉस्टल में चले गए, हॉस्टल में जाके उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया, अंदर एक लड़का लड़की के साथ बैठा था, लड़का बोला सर कजन है, अरे वाह वही पुराना बहाना। तो विश्वविद्यालय में बहुत याद ताजा हो जाती है। मैं आज जो छात्र आए हुए हैं, मैं यहां जो प्राध्यापक हैं या डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं जाके। मैं उन लोगों में हूं जो इमरजेंसी के अंदर जेल में था, मैं फाइटर हूं। मेरे पिताजी भी इमरजेंसी के अंदर जेल में थे और मैं उसके बाद 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। मोदी जी की सरकार में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर था, अटल जी की सरकार में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिनिस्टर था, मोदी जी की सरकार में स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। और मैं समझता हूं मैं जो कुछ भी था और मेरी जो भी ट्रेनिंग हुई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इनके कारण हुई। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने सब कुछ गिना दिया आपको। मैं सिर्फ आपको कितना कहना चाहता हूं, जीवन में समय बहुत है, मेहनत करनी होती है। जब इस कार्यक्रम की हमने संयोजना की थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने जब गांधी स्मृति दर्शन समिति की ओर से पत्र लिखा उपराष्ट्रपति जी को कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इनोवेशन के पर हो रही है, आप आएंगे? तो मैं कहना चाहता हूं उपराष्ट्रपति जी ने बिना देर कहा मैं इस कार्यक्रम के अंदर जरूर आऊंगा। मैं उनका स्वागत करता हूं जाकर। इनका आना हमारे लिए उत्साह देता है। विश्वविद्यालय उनका है, वो चांसलर हैं जाकर। आज हम गांधी स्मृति दर्शन समिति के वाइस चेयरमैन हैं। ज्यादा गर्व हमें इसलिए है कि इसके चेयरमैन जो हैं वो स्वयं प्राइम मिनिस्टर हैं। इस स्टेज से मैं आपको आज निमंत्रण दे रहा हूं कि जो गांधी दर्शन है, 36 एकड़ का एक प्रांगण है राजघाट के साथ, वहां आइए और हमारी 3 म्यूजियम देखिए जी। दूसरा हमारा प्रांगण है 30 जनवरी मार्ग पे, वो पुराना बिरला हाउस है जिसको गांधी स्मृति कहते हैं, आप आइए, उसके अंदर 2 म्यूजियम देखिए जी। और केवल आइए नहीं, लोगों ने गांधी जी को बहुत गंभीर बना दिया, उन पे रिसर्च हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, सिंपोजियम हो रहा है, लेक्चर्स हो रहे हैं, सैकड़ों बुकें लिखी जा रही हैं, पर गांधी को लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर आज गांधी को सबसे ज्यादा कोई फॉलो कर रहा है वो मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो उसको फॉलो करने के अंदर लगा हुआ है जी। और ये मैं कहने के लिए बात नहीं कह रहा हूं जी, ये जो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, गांधी क्या कहते थे? गांधी मोटी मोटी बातें कहते थे, गांधी सत्य की बात करते थे जी। और सत्य का मतलब था जीवन के अंदर सत्य पे चलकर ही आप पा सकते हो। ऐसे ऐसे कंट्री हैं जापान समेत जो एक पैसे की उनके नागरिक टैक्स की चोरी नहीं करते जी, क्योंकि देश तब बनता है जब सारे देश के नागरिक उससे लगते हैं जी। आज अकेला प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। अगर 130 करोड़ के लोग 130 करोड़ लोग जो हैं प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर इस देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा कर देंगे, और तब आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और इंफॉर्मेशन से किस तरह से देश की प्रगति होती है। गांधी जी कहते थे सत्य, गांधी जी कहते थे अहिंसा, गांधी जी कहते थे स्वच्छता, गांधी जी कहते थे स्वदेशी, गांधी जी कहते थे सत्याग्रह। इन 5 चीजों को तो है, इनमें से जितना भी आप अडॉप्ट कर सकें वो करिए जाके। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गांधी का स्वच्छता उठाया जी। आपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, आपने इनोवेशन भी बहुत कर दिए जाके, पर देश के अंदर अगर स्वच्छता नहीं है, कोई आपके देश के अंदर नहीं आएगा जी। आज हमारा देश टूरिज्म के अंदर सबसे, वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे हो सकता है, पर जानते हैं क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि कनेक्टिविटी और दूसरा स्वच्छता। इसलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से सबसे पहले इस बात की घोषणा करी। मैं उपकुलपति जी का आभारी हूं जिन्होंने गांधी स्मृति के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बात की। उससे मुझे लगा कि लोग गांधी स्मृति और गांधी दर्शन देखने आएंगे, गांधी जी के विचारों और आदर्शों को देखेंगे और आगे चलेंगे। तो पहला
जो उठाया वो स्वच्छता का उठाया। फिर आप देखिए देश का सशक्तिकरण कैसे होगा जाके। इसी प्रधानमंत्री ने देश के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना दिए। आप इसको इनोवेशन नहीं कहेंगे, आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। ये महिला सशक्तिकरण है। जो हमारी मां बहनें खुले के अंदर जाया करती थी, उन्होंने शौचालय का निर्माण करके इस देश के अंदर जो है वो क्रांति ला दी। इसीलिए मैं कहता हूं गांधी को इतना गंभीर मत बनाओ। गांधी जी के ऊपर चलने के लिए कुछ करना है। मेरे लिए भाषण करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि जो एक पंक्ति मैं आपको बोलता हूं वो दूसरी पंक्ति मेरे अंदर जाती है कि विजय गोयल जो तू इनको बता रहा है, तू इसको खुद फॉलो करता है कि नहीं करता जाके। और नहीं तो घर जाकर आप गूगल करेंगे, विजय गोयल को सर्च करेंगे और देखेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है उसका अपना जीवन के अंदर 50 साल के अंदर उपलब्धि क्या है। और जानते हैं मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी लाखों लोगों को जो बर्बाद कर रही थी उस लॉटरी को बंद कराने वाला आपका भाई है विजय गोयल था, जिसने पूरे देश से लॉटरी को बंद करवा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और लोकल टू ग्लोबल की बात करते हैं। उसी के लिए आज ये सेमिनार हो रहा है जी। मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चरली स्ट्रांग, इकोनॉमिकली वाइबल और विभिन्न क्षेत्रों में नई इनोवेशन के लिए अवसर प्रदान करना चाहते हैं। ऐसा ही वो भारत चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत को बचाया, चाहे वो काशी का कायाकल्प हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, महाकाल उज्जैन हो, इसको धार्मिकता से नहीं में देखिए, इसको टूरिज्म से देखिए। मैं ये समझता हूं कि आज जिस तरीके से विश्वविद्यालय ने ये जो कार्यक्रम किया है उसके अंदर अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अकेले आप कोविड को उठा लीजिए जी, पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें 1 अरब से ज्यादा वैक्सीन जो है देशवासियों को लग गई हो। अगर वो है तो वो मेरा भारत है जाके जी। वो भारत जिसके अंदर पीपी किट का निर्माण नहीं होता था, वो भारत जिसके अंदर वेंटिलेटर्स का निर्माण नहीं होता था, वो भारत जिसमें रक्षा क्षेत्र के अंदर जो निर्माण होना था वो हुआ नहीं करता था। आज हमारा देश उस क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ गया है। हमारे नौजवानों के अंदर बहुत दम है। आप देखिए दम के अंदर कि कुल मिलाकर आज जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उन सब के अगर सीईओ को देख लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट देख लो, चाहे पेप्सी देख लो, फेसबुक देख लो, गूगल देख लो, स्टारबक्स देख लो, आईबीएम देख लो, इन सब के चीफ अगर कोई हैं तो वो भारतीय है और कोई दूसरा नहीं है। इस पर गर्व होता है हमको। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार पुनः उपराष्ट्रपति जी का अभिवादन करता हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी यहां आकर पुरानी यादें ताजा कर दी। धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. I now request the dignitaries on the dais to kindly release the conference proceedings. Thank you, everyone. अब मैं हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखर जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस गरिमामयी अवसर पर हम सबको संबोधित करें। Namaskar. You have an excellent Vice Chancellor. आते ही होमवर्क दे दिया, 2 किताब थमा दी।
I have had the benefit, experience of being chancellor of several universities. पर यहाँ आकर कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है. I am grateful to my very old friend, extremely talented, with huge experience, both in government, organizations, and parliament. पर सोचा नहीं था वो मेरे लिए मुश्किल पैदा करेंगे. इतना जबरदस्त भाषण दे दिया कि सक्सीडिंग वक्ता के लिए तो परेशानी है. As a very distinguished former president of the union, he generated a connect and created problems for me. Be a little kind to me. As your chancellor, I seek to connect with all of you. Professor Balram Pani ji, Professor Prakash Singh ji, Dr. Vikas Gupta ji, Professor Neera Agnimitra ji, Professor K.P. Singh, members of the faculty, professors, teachers, and most important, dear students. I'm happy to be here when this university is having a milestone development. 100 years in the journey of any organization is a major event. For Delhi University, which is in the capital of the largest democracy, this event has far more significance. Congratulations for this great journey, traversing lot many developments as indicated by the Vice Chancellor. I have gone through the agenda that has been set out, and I have no doubt that the deliberations that will take place will cover critical issues that will focus on infrastructure, information, and innovation. इन तीनों के बिना आज के दिन काम चलना मुश्किल है. I can tell you, dear friends, boys and girls, India is on the rise as never before. Rise of the country is unstoppable. I'll give you my own instance. When I was elected to Parliament in 1989, we members of Parliament were given 50 gas connections in a year. And that was a great power in our hand. Imagine, more than 180 million gas connections were made available free to needy households. Imagine where have we been. I recollect the day in 1979 when I went to a bank to get a loan of 6,000 rupees so that I could start my library. The bank manager was kind. I could get that loan. And now, you have an idea in your mind. You need to be a young person. Money is not a problem. And that is why we can boast today of having unicorns more than that of China. Our startups have baffled the world. Our youngsters have done miracles. All this has taken place because there has been transformation in our policy ecosystem. Now, all efforts are being made to ensure
everyone should be in a position to exploit his or her talent to the utmost optimum level. और इस प्रकार के हालात होने का मतलब है कि भारत का जो स्थान सदियों पहले था, वी आर ऑन वे टू रिक्लेमिंग इट. आज के दिन कितना, व्हाट इज अ मैटर ऑफ प्राइड टू बी एन इंडियन. दुनिया में कहीं भी जाइए, भारतीय और भारतीयता का सम्मान एक अलग तरीके से है. आवर लीडरशिप, आवर डिप्लोमेट्स and our functionaries, they talk only one language, and that is the language which is in the interest of our country. The voice of Indian Prime Minister is heard in world fora more than ever before. All this has come about because India has a great demographic dividend. The future belongs to the youngsters. They have to shape the destiny of this country. It is their direction, their attitude that will define course of history. और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है. जो चीजें पहले सोच नहीं सकते थे, जिनके बारे में विचार नहीं कर सकते थे, सोचते समय लगता था ये संभव कैसे होगा, वो जमीनी हकीकत है. अंदाजा लगाइए, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि 1 अप्रैल 2020 से 80 करोड़ जनता को लगातार मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है. दुनिया का कोई देश सोच नहीं सकता. आप ये देखिए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड बूस्टर डोज, 200 करोड़ वैक्सीन लगाना आसान काम है क्या? बहुत मुश्किल है. ये संभव हुआ है. पहले क्या देखते थे? लंबी लाइन लगती थी, बिजली का बिल जमा कराना है और किसी चीज का उपयोग करना है. पर टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है, this has become a matter of past. Let us take pride that our country is rising as no other country at the moment. मुझे एक बात की बड़ी चिंता है और मैं चिंतन करता रहता हूं कि कुछ लोगों को हमारे जो बढ़ोतरी हो रही है उससे परेशानी क्या है? Why can't they digest the growth story of India? Why can't they digest that Bharat is on the rise? मुझे बड़ी परेशानी होती है जब कोविड महामारी थी और दुनिया के रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए थे. आप सब जागरूक हो, ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. यू नो व्हाट हैपेंड इन मैनहट्टन, यू नो व्हाट हैपेंड इन द कॉरिडोर्स ऑफ लंदन हॉस्पिटल्स, यू नो व्हाट हैपेंड इन यूरोप. पर वहां जो कहते हैं ना, हमारे विजय गोयल जी ने तो यहां बहुत कुछ देखा है. टंगी लगाना कहते हैं ना, टंगी लगाना खेलते समय. अपने यहां टंगी लगाने की जो प्रवृत्ति है वो दुनिया में और कहीं नहीं देखी. एंड this will be taken in high decibel. All the cylinders will be firing. Time has come when youth of the country, students in particular, boys and girls, become
authentic opinion makers. Because what has been done now is to bring about a transformation where an ordinary person of this country can make impactful presence in every walk of life. मैंने महसूस किया है, अध्ययन किया है, 34 साल के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया बाय वे ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. इस पॉलिसी का इवोल्यूशन was after taking into consideration the various competing points of view and inputs from all stakeholders. This policy will be a game changer. पहली बार भारतीयता को पॉलिसी ने समझा है. पहली बार इस पॉलिसी ने हमारे सोच को एक नया आयाम दिया है. मातृभाषा की ओर संकेत देकर हमारी प्रतिभा को उज्ज्वलित करने का एक नया रास्ता दिखाया है. ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि इस बदलाव के मुख्य केंद्र क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर. सड़क देख लो, एयरपोर्ट देख लो, पोर्ट देख लो. इंफ्रास्ट्रक्चर जो कई बार विजिबल नहीं है अबाउट टेक्नोलॉजी, उसको देख लो. उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा देखिए. आप में से जो लोग दिल्ली से थोड़ा बाहर जाते हैं, मेरठ जाने का रास्ता कितना कम हो गया है. दिल्ली के कहीं भी निकल जाइए, जो सोचा नहीं वो हो चुका है. वंदे मातरम ट्रेन हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन हैं. पर यदि अगर वंदे मातरम ट्रेन के चलते समय थोड़ी सी खरोंच आ गई, वो मेन स्टोरी है. कब बदलेंगे? When will we change? उस मोर की तरह नहीं होना है. जो नाचता तो बहुत अच्छी तरह है, पर पांव की तरफ देखकर उसको रोना आता है. We are losing sense of proportion. दुनिया इतना बड़ा संकट झेल रही है. दुनिया के देशों में परेशानी है, अन्न की परेशानी है, ग्रोथ कम है. ऐसी परिस्थिति में इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार. And all this because our people are talented. They are hard working. और अब क्या है, हाल के कुछ वर्षों में नीतियों में इतना सकारात्मक बदलाव आया है. पहले भी होता ही था, पर जब स्वच्छ भारत अभियान आया तो हर आदमी जागरूक हो गया. गांधी जी के सपनों का भारत हमारे सामने नजर आने लग गया. एंड दिस हैज बिकम अ ग्रेट इंडस्ट्री ऑल्सो. पहले क्या था, आप में से अधिकांश लोग जानते हैं, एंड बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. जब भी कोई भारतीय पहले विदेश में जाता था, कभी भी उसने केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंका, कभी भी रोड का नियम नहीं तोड़ा. पर देश में आते ही उस समय हमारा अधिकार था. केले का उपयोग किया है तो गाड़ी से फट बाहर फेंको. रोड इज आवर गार्बेज कैन. यह संस्कृति बदली है. इसकी शुरुआत जब भारत के प्रधानमंत्री ने की तो उस समय कुछ लोगों ने टिप्पणी की,
अपने उस देश के वासी हैं और जहां महात्मा गांधी जी ने इतने अच्छे सिद्धांतों के बारे में कहा है, लेट अस नेवर रिडिक्यूल अ गुड आइडिया। एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। माई वे इज द हाईवे, वॉट आई से इज राइट। बॉयज एंड गर्ल्स, give up this idea. We must always listen to the other point of view. The other point of view is very important. Let us not be intolerant of that point of view. And मेरा अनुभव कहता है, more often than not, the other point of view is the correct point of view. आज के दिन यदि अगर हम देखें विकास की यात्रा, तो उस विकास की यात्रा के आयाम इतने जबरदस्त हैं कि हर व्यक्ति को अपना उज्जवल भविष्य नजर आता है। जो भाई विजय गोयल ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है which can claim to be a global giant and does not have an Indian genius at the head of it. अब देखिए, मेरे को तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट लग रहा है। India has surpassed China in creating unicorns, and our unicorns in fiscal dimension are in billions. ये मैं आपको बता दूं, ये जितना जो कुछ हो रहा है, ये कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल लोग नहीं कर रहे हैं, ये आप जैसे यंग माइंड्स कर रहे हैं, ब्रिलियंट बॉयज एंड गर्ल्स कर रहे हैं, एंड यू आर डिफाइनिंग न्यू इकोनॉमिक इकोसिस्टम ऑफ दिस कंट्री। मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय celebrating centenary year, it has an excellent track record. The value system exemplifies the best that can possibly be imagined. फिर भी मैं ये कहूंगा, we must set very high benchmark. जब हमारे अतीत में देखते हैं, हमें याद आता है नालंदा। We were a global hub. Our ancient universities give us a direction कि दुनिया ने हमारी तरफ क्या देखा था। I do hope and I am confident after listening to your learned Vice Chancellor that no effort will be spared to ensure the university is on incremental trajectory of growth so that it becomes an institute of excellence and eminence at a global level. Infrastructure is important, but a university is known by the commitment of its faculty. And I have no difficulty in asserting, without fear of contradiction, that Gurujan, members of the faculty of Delhi University, are outstanding. They are one of the best in the country. And this trend will result in our great growth. Atmanirbhar Bharat, a new concept, is taking shape during Azadi Ka Amrit Mahotsav. We must focus
in a very different manner on Azadi Ka Amrit Mahotsav. We need to know our history. You go to any part of this country, you will find unsung heroes. You will come across that, yes, that particular person played a critical role in our freedom movement. We have to be thoroughly updated about those who sacrificed their lives to make our lives comfortable. I would not take more time, but say two things in particular. A nation is defined by the student community. Any country that has to go up, its student community will define it. Education alone is a great equalizer. Infrastructure is easy. Innovation is difficult. Industry can be achieved. Entrepreneurship is tough. And these are the virtues which our student community has. I therefore appeal to you. One, please have highest respect for your elders, for your teachers, and for your parents. Please always keep your Rashtra before everything else. Our national interest is supreme. Our national interest is not optional. It is not negotiable. It is the only way out. And lastly, our Indian Constitution has prescription of fundamental duties. Everyone is aware of the rights. Everyone is aware fundamental rights. To serve Bharat Ma, to see this nation becomes Vishwaguru, which it will for sure, let each one of us focus on fundamental duties. And the moment we will read those fundamental duties, आपको लगेगा पालन करना बहुत आसान है और पालन करना कितना सुखद है, कितना जरूरी है और देश को कितनी ताकत देगा. I am extremely delighted and happy to be here at this occasion, and I would end that all that my dear friend Vijay Goyal has said about me should be taken with a pinch of salt. Thank you so much. Thank you, sir, for your words of wisdom. I'm sure all of us will benefit a lot from the wisdom shared by sir. I now request Dr. Vikas Gupta ji, Registrar, University of Delhi, to kindly extend the vote of thanks. Sir. Thank you so much. Most respected Chief Guest of today's function, Honorable Vice President of India and Chancellor, University of Delhi, Honorable Vice Chairman, Gandhi Smriti and Darshan Samiti, esteemed Vice Chancellor, University of Delhi, dignitaries on the dais, distinguished invitees, guests, colleagues, friends, and dear students. Namaskar. First and foremost, we are thankful to the Almighty, who has always blessed this university with the leading role in our nation building. This conference on the much important topic of infrastructure, information, and innovation for building a new Bharat
is another step in that very direction. I, on behalf of the University of Delhi and on my own behalf, stand before you on this occasion to propose the vote of thanks, which, as always, is a matter of great honor and privilege to me. I would like to convey my deep regards for the enlightening and thought-provoking inaugural address by the Honorable Vice President of India on this occasion. Sir, your thoughtful words of wisdom will go a long way in shaping the future course of action of the university, which has been working towards pursuing the worthy goal of building a new Bharat. My heartfelt gratitude to Shri Vijay Goyal, Honorable Vice Chairman, Gandhi Smriti and Gandhi Samiti, for gracing this occasion with his presence. I take this opportunity to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh Sir, for his inspiring leadership, coupled with confidence and reposing faith on us in organizing this program. Sir, I wish to convey that besides your words, we learn from your unpretentious persona and actions, which are always for the well-being of the university. Your vision and decisive leadership for the university always resonates with our national goals. Thank you, sir. I would like to thank Professor Balram Pani, Dean of Colleges, Professor Shri Prakash, Director South Campus, Professor Payal Mago, Director Campus of Open Learning, and Professor Rajni Abi, Proctor, for their continued support at every stage of this program with involvement in minutious detail to ensure its smooth implementation. I would like to convey my sincere appreciation to Professor K.P. Singh, the organizing secretary of this conference, and Director Gandhi Bhavan for his excellent initiative. My profound thanks to Professor Neera Agnimitra, Convener Centenary Celebration Committee, and all members of the Program Management Committee for their significant contribution to make this program a reality. Substantial contributions of Shri Anup Lathar, Dr. Gitanjali Kala, and Shri Jay Chanda, and other distinguished members of the Centenary Celebration Committee, thematic committees, is sincerely acknowledged as they have played an important role to make this event a grand success. The vote of thanks will be incomplete without mentioning the extensive contributions of the proctoral team, Professor Alka Nagpal, Dean Faculty of Music and Fine Arts, along with the performing faculty members and the students who have performed various melodious notes today. Professor Sanjeev Singh, Joint Director DUCC and his team, Shri Girish Ranjan, Finance Officer and his team, Shri Anupam Shrivastava, Chief Engineer along with the Staff Engineering Office, Professor Rupam Kapoor, Secretary Garden Committee, and a team of gardeners, Shri Sandeep Sharma, Assistant Registrar, along with the staff of General Branch, Captain Parminder Sehgal, and a team of NCC NSS volunteers in making this event a memorable one. I would also like to thank Professor Bipin Tiwari, OSD Equal Opportunity Cell, and our sign language interpreter, Ms. Preeti Sapra, who helped us make this program more inclusive. Appreciation is also due to the staff involved in the overall security and sanitation services. I also wish to extend my gratitude to Dr. Mridula Bhatia, who very expressively compared this program. Last but not the least, I thank our students, parents, media persons, and guests for contributing meaningfully to the university events. This list is endless, wherein large number of persons were involved in organizing this inaugural session. I thank all these persons for their contributions. Nonetheless, in case some names may not have been mentioned, I apologize for unintentional omission and thank them as well. In conclusion, I would like to convey my heartfelt congratulations to every stakeholder of the university. Jai Hind. Thank you. Ladies and gentlemen, may I request all of you to kindly rise for the national anthem.
Kindly take your seats. I request the audience to kindly be seated while Honorable Vice President exits the venue. Thank you. Please kindly be seated. Do not leave your seats. I request all of you to be seated for a few minutes longer.